Now the topic is Van Hoff factor. It is denoted by I, and this factor is used with the all colligative properties. This factor is used when the solute is ionic in nature, but when the solute is not ionic, non-polar, means covalent solid or liquid, then there is no meaning of the Van Hoff factor. Van Hoff factor is used only with the ionic mixtures. Okay. Van Hoff factor I is the ratio of observed colligative property upon calculated colligative property. Observed colligative property or calculated colligative property. Yeah, I is equal to the ratio of calculated molar mass, obviously molar mass of solute, upon observed molar मास. भी मैंने कहा आई की वैल्यू वहां लगाते हैं जहां आयनिक मिक्सचर होता है, आयनिक सॉल्यूट यूज किया जाता है. अब आयनिक है तो आयनिक का डिसोसिएशन भी हो सकता है और एसोसिएशन भी हो सकता है. इफ in a chemical reaction there will be dissociation, then the value of I is always greater than 1 for dissociation, and where the association is, then I is always less than 1 for association. एसोसिएशन में हमेशा डाइमर का फॉर्मेशन होता है और डिसोसिएशन में हमेशा आयंस का फॉर्मेशन होता है. जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें KCl, तो KCl आफ्टर डिसोसिएशन फॉर्म्स K plus and Cl minus. And if we take an example of acetic acid CS3COOH, so in covalent solvent means when acetic acid dissolved in the benzene, then two molecules of acetic acid join to form a dimer CS3COOH whole twice. Inorganic solvent means benzene, and when acetic acid is added into water, it also dissociates in acetate ion and H plus ion, but in benzene it is associated and form a dimer of acetic acid. So for this the value of I is always more than 1, and for this the value of I is always less than 1. If I is equal to 0, I is equal to 1, not 0, I is equal to 1, means there will be no association or no dissociation of the solute in the solvent. Let me take an example of glucose or sugar. So when glucose dissolved in the water, it cannot be dissociated into carbon or water and not associated in the form of the dimer. So there the value of I is 1, but in dissociation and association the value is differ from 1, maybe less than 1 or maybe more than 1. So this is the Van Hoff factor. So we use this term with the colligative properties. Delta TB is equal to KBM, so use I. Delta TF is equal to KFM, so use I. P1 naught minus P1 upon P1 naught is equal to I
X2, and next pi is equal to ICRT. So use term I when there will be dissociation or association in any question. Okay, thank you. Now next one is the degree of dissociation. Degree of dissociation is denoted by alpha. Degree of dissociation. Degree of dissociation को जानने के लिए हमें सबसे पहले एक I का एक और फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए. I इज इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर dissociation or association divided by total number of moles of particles before dissociation or association, है ना. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डिनोटेड बाय अल्फा. अल्फा समझने के लिए सबसे पहले हम समझें कि आई को हम और कैसे लिख सकते हैं. तो आई कैन बी रिटन एज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. वी कंसीडर द रिएक्शन a substance which can be dissociated into n substances. कोई सब्सटेंस है, मान लीजिए ये सब्सटेंस A है जो डिसोशिएट होता है किसमें, नंबर ऑफ A में. जैसे KCl है तो एक K बना रही है, एक Cl बना रही है. इसी तरह कोई सब्सटेंस A है वो बनाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A. अब हमने कंसीडर किया एट टाइम 0 पर इसका 1 मोल लिया तो ये कितना बनेगा 0 क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई. एंड आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू t, आफ्टर टाइम t इट इज डिसोसिएटेड अल्फा. ये अल्फा कम हो जाता है तो इधर से अल्फा कम हो रहा है. इनके बीच में रेशियो कैसा है 1:1 का. ये 1 है, इधर n बन रहा है. तो इसी तरह ये अल्फा कम हो रहा है तो ये इधर कितना बनना चाहिए एन अल्फा. इक्विलिब्रियम चैप्टर में आपने पढ़ा है कि एक जैसा रेशियो होता है तो हम उसका जितना डिसोसिएशन इधर से माइनस करते हैं उधर ही उतना लिखते हैं. तो अगर इधर अल्फा कम हो रहा है यानी उधर अल्फा बन रहा है तो इधर जो है 1 और n का रेशियो है, इसका मतलब 1 माइनस अल्फा है तो इधर n अल्फा हो गया. अब फॉर्मूले पर जाए. I is total number of moles of particle after dissociation. total number of moles, ये पूरे मोल्स जो हैं ये टोटल है यहाँ से यहाँ तक. तो 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन. अभी डिसोसिएशन नहीं हुआ तो कितना था 1 था पार्टिकल्स. ठीक, तो I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा अपॉन 1 का मल्टीप्लाई हो गया नहीं. I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 1 माइनस अल्फा प्लस एन. 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा है तो हमने क्या किया इसको लिखा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा. अब हमने लिखा 1, इन दोनों में से अल्फा कॉमन ले लिया तो अंदर बचा एन माइनस 1 और इधर बचा आई. ठीक, अब 1 को इस तरफ कर दिया तो ये हो गया अल्फा एन माइनस 1 इज इक्वल टू आई माइनस 1. तो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1. तो फॉर्मूला हमारा क्या बन करके आया, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1. दिस इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन when any ionic substance is dissociated into n moles of the substance.
So here we take 1 at time t 0, it is 0. At time t it is dissociated alpha, so it form N alpha. The formula of I is total number of moles of particle after dissociation or association, 1 minus alpha plus N alpha, और फिर इसको कैलकुलेट किया and after that we find the value of alpha. Alpha is equal to I minus 1 upon N minus 1. So we use this formula to calculate the degree of dissociation. Okay, thank you. Now the degree of association, it is also denoted by the term alpha. So the formula of I is, total number of molecular particle after dissociation divided by number of particles before dissociation. So we take an example, N substance, N ionic substance है, N number है उसके number of moles. In organic solvent means benzene, when it mixed, it formed a dimer substance N, means Na forms a N. So at time t is equal to 0, it is 1 mole, it is 0. At time t is equal to p, when the time t is taken, then 1 minus alpha, it associated to form An. Here N is the number of moles, but it here is only 1 mole, means N forms 1 mole substance. So alpha forms alpha upon N substance. So alpha is dissociated, that means it is formed alpha by N substance. Okay. Now we use formula I is equal to 1 minus alpha plus alpha by N, total number of particle after dissociation. This is after dissociation na? Upon before dissociation is 1. So here is I is equal to 1 minus alpha plus alpha by N. 1 plus, we take common alpha, so here 1 upon N minus 1. Here we can write it 1 plus alpha 1 minus N upon N is equal to I. So alpha 1 minus N upon N is equal to I minus 1. We can write now I shifted to this side. So I minus 1 is equal to alpha 1 minus N upon N. N is multiplied there. So alpha is equal to N is multiplied. So N I minus 1 upon 1 minus N. This is the formula to calculate the degree of association. The formula is alpha is equal to N I minus 1 upon 1 minus N. So this alpha means degree of association. So you use the degree of association N I minus 1 upon 1 minus N formula for the solution in which ionic substance is used, which is dissociated or associated in the solution. Okay, thank you.